Hello guys, I am Shubham from Fluid Tutorials. So today in this video we are doing translation in eukaryotes. In the previous video we have studied in detail translation in prokaryotes. So first, if you have not watched that video, please watch that because that video is important before you go to eukaryotic translation. Okay, so let's get started with the video. Basically, eukaryotic translation जो process है that is very much complicated, okay, or we can say complex, but we will try to make it easy. Okay, so completely watch the video, and if you like, please subscribe to the channel. Okay, so let's get started. When we are doing the translation in eukaryotes, we will compare it. Okay, when we study translation in eukaryotes, we will always compare it with the prokaryotic translation and then go to eukaryotic translation. So that makes it very easy to study. So same like prokaryotic, this is also divided in three phases: initiation, elongation, and termination. Right? Same three phases है इसमें भी. So prokaryotic ट्रांसलेशन में इनिशिएशन में थ्री फैक्टर्स हैं, राइट. इसमें बहुत फैक्टर्स है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. ओके, सो हियर बेसिकली इन इनिशिएशन वी राइट ई आई एफ, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर. ओके, elongation factors e e f, and e stands for eukaryotic and I f initiation factor, e f elongation factor, and termination e r f release factors, right? So these are the factors. I will write here S because there are lot of factors. And initiation जो है, initiation is very much complex. Elongation and termination little bit, but initiation very much. So हम लोग इसे easy करेंगे, right? Easy है अगर समझेगा तो बहुत easy है. Okay, first of all differences क्या है? We will see like mRNA is processed. Processed mRNA होता है यूकैरियोट्स में, right? Process means what? This is a mRNA having only exons, right? Here there is a cap and here there is a tail. Okay, we know this is a poly A tail and this is cap. Okay, and here are the exons, right? So capping, tailing, and splicing. After these processes, this mRNA is formed. Please watch the previous videos. Okay, I will attach those in the I button. Very important things. We have discussed this already. This is the basic because we have to study in the order, right? Order में study करना चाहिए. पहले first application, उसके बाद transcription and translation. So we have already discussed these things. Please watch those. Okay, बहुत easy किया है हमने, right? उसके बाद repair भी किया है. So all the videos are there in the molecular biology playlist. Second difference here is the sequence that is known as Kozak sequence. Kozak sequence. Initiator, right? RBS, ribosome binding site. So sequence को yeah, in eukaryotes we call Kozak sequence. In prokaryotes, Shine-Dalgarno sequence था, right? And the last difference is the ribosome, which is 80S ribosome, right? 80S. Large subunit is 60S, small subunit is 40S. So these three are the main differences. Okay, now we will start with the actual process, right? So I have collected a lot of diagrams basically
डायग्राम्स की वजह से बहुत ही इजी होगा समझने में ट्रांसलेशन का इनिशिएशन, और we can recollect, right? Recall it. So this is the first step, initiation. Initiation. Okay, initiation. Two things are happening simultaneously. See here. First is A and B. Both are taking place simultaneously. We know पहला small subunit आएगा, right? Small subunit आएगा. So see, this is a large subunit first of all. Okay, this is a large subunit, this is a small subunit. As I told, there is a sequence we have to remember, A, P, E, right? A साइड ब्लॉक होती है, E साइड ब्लॉक होती है, तो E साइड पर tRNA आता है, इनिशिएटर tRNA. Okay, that is brought by, we can see here, EIF2. प्रोकैरियोट्स में भी IF2 ही लाता है, राइट? यहाँ पे भी IF2 ही है, लेकिन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, और इसको चाहिए GTP, राइट? हैवी मॉलिक्यूल है, एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, हैवी मॉलिक्यूल है, लाना है तो एनर्जी चाहिए, दैट इज GTP चाहिए. सो दिस इज EIF2 GTP. ओके, वी हैव फर्स्ट फैक्टर, वी हैव टू रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इनिशिएटर tRNA को लाएगा. और एक डिफरेंस है, वी हैव टू रिमेंबर दिस डिफरेंस. इनिशिएटर tRNA, initiator tRNA and amino acid, we can say in prokaryotes it was formulated methionine, right? यहाँ पे सिर्फ methionine होता है. Okay, सिर्फ methionine. This is also next important thing while studying initiation. Right, so we can see here, I will highlight initiator tRNA methionine. So इसे लाएगा EIF2 GTP, right? इसके पहले क्या हो रहा है? से दिस इज लार्ज सब यूनिट सेपरेट है, स्मॉल सब यूनिट पे ए पर ब्लॉक है 1A, ई पर 1. ओके, ए साइड एंड ई साइड दोनों पे 1 है, ए साइड पर 1 है, 1A है, राइट? सेम सेम है ए 1 ही है, कॉमन है, 1 1, इजी है याद रखने को. ए साइड पर भी 1, ई साइड पर भी 1, ए साइड पर 1A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, राइट? नेक्स्ट थिंग, EIF5 भी है. ओके, एंड 3 जो है 3 बहुत बड़ा है साइज में, वी कैन सी फ्रॉम द पिक्चर ओनली, एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट, याद भी रखना है हमको. EIF3 इज अ लार्ज मॉलिक्यूल. ओके, बहुत बड़ा है, पूरा सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट इसने कवर किया है. सी वी कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, पूरा स्मॉल सब यूनिट कवर किया है. ओके, व्हाई दिस हैपेंस, वी हैव स्टडीड दिस इन प्रोकैरियोटिक काउंटरपार्ट. राइबोसोम का एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, प्रीमेच्योर एसोसिएशन, राइट? लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, एज वेल एज जो tRNA आएगा वो ए साइड ई साइड पर बाइंड नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये फैक्टर्स है. 1 है, 1A 1 एंड 5 इज देयर. जो 5 है वो 1 पर बाइंड है, राइट? वी कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, दिस 5 बाइंड विद 1 के साथ, एंड यहाँ पे कुछ 3 है, पूरा कवर किया है स्मॉल सब यूनिट को. एंड उसके बाद जब सब जगह ब्लॉक है, उसके बाद आएगा EIF2 GTP bringing the tRNA, right? And that will bind to the P side. Easy है. And the complex is formed 43S pre-initiation complex, right? So this is the about ribosome thing, small subunit. Small subunit अभी रेडी है यहाँ पे. Now mRNA को रेडी करना है. Okay, mRNA को, mRNA कैसा रेडी होगा? दिस इज अ 5 प्राइम कैप, वी कैन सी हियर 5 प्राइम कैप, कैप पर बाइंड होता है E. ओके, कैप पर बाइंड होता है E, E के साथ
afterwards G comes. Okay, EIF 4G. Okay, we should remember there is one trick here. Cap binding complex. ओके जो कैप पर बाइंड होता है वो कॉम्प्लेक्स है EIF4। उसमें टाइप्स है AGE एज। रिमेंबर दिस एज। पहला ई बाइंड हो रहा है राइट, ई इज बाइंडिंग फर्स्ट, उसके बाद जी, ओके उसके बाद ई। अगेन दिस इज इन दिस ऑर्डर, इन्वर्टेड ऑर्डर। AGE को इनवर्स में पहला ई, उसके बाद जी, उसके बाद ए, राइट एंड देन लास्ट EIF4B। ओके बी भी है यहाँ पे, राइट गॉट इट। बी कहाँ पे फाइंड हो रहा है along with A। we can see first of all E, उसके बाद G, उसके बाद A एंड उसके बाद B आएगा, राइट। सो द mRNA इज रेडी नाउ। अभी mRNA को रिकॉग्नाइज करेगा ये राइबोसोम, राइट। राइबोसोम will recognize this mRNA along with factors एंड देन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। गॉट इट, 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। आई होप दिस इज इजी, राइट। इजी है, पहले स्मॉल सब यूनिट को रेडी होना है। फैक्टर्स है ए साइड पर, ई साइड पर 1 1, ए पर 1A है एंड 3 इज देयर कवरिंग द होल राइबोसोम, ओके एंड देयर इज आल्सो एडिशनल फैक्टर 5, राइट। उसके बाद टीआरएनए को लाएगा EIF2 along with GTP एंड फॉर्मेशन होगा 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। mRNA को रेडी करना है, उसके लिए फैक्टर्स EIF4 पहले बाइंड होगा E, उसके बाद G, उसके बाद A, उसके बाद B। ओके इजी है, आई टोल्ड। रिमेंबर एज इन द इनवर्स ऑर्डर प्रोटीन बाइंडिंग होती है, राइट। So this will lead to the formation of 48S pre-initiation complex, right? This is called as ternary complex. tRNA along with GTP, we have to, okay, ternary complex. We have to remember this. EIF2 GTP along with initiator tRNA is called ternary complex. Got it? So यहाँ पे एक मॉडल है, दिस इज circularization of eukaryotic mRNA during translation। ओके मतलब सर्क्युलराइजेशन होता है, what is the benefit, so that reinitiation occurs fast, okay, and efficient translation होता है, right, efficient translation and helps in reinitiation। so this is a possible because there is interaction between these things। see अभी हमने देखा एज है, एज कैप बाइंडिंग प्रोटीन AGE, right, cap binding protein है and these are the protein which are bound to poly A tail। we know poly A tail पर bind होता है PABP और poly A binding protein stabilization के लिए, right, stabilization के लिए bind होता है। so these are those things, poly A binding protein and poly A binding protein interacts with G। we can see here, see this interaction हो रहा है जिसकी वजह से जो कैप है और जो टेल है वो पास पास आके एक सर्कल लाइक mRNA फॉर्म होता है। ओके दिस विल हेल्प इन द रीइनिशिएशन। सी वी कैन सी हियर स्टार्ट साइड, स्टॉप साइड, ओके आफ्टर termination ribosomes are dissociated and reinitiation will again take place। got it? very important thing is that circularization इस वजह से होता है because there is interaction between
poly binding protein associated on the poly A tail, and cap binding protein, specifically G protein, right? EIF or G. So now next thing क्या है? Recognizing the start codon. Recognizing the start codon. Start codon क्या है? AUG, right? AUG, and this occurs by the scanning. Ribosome scan होगा अभी. Okay. First of all, this is a 48 initiation complex, right? IF to GTP bind है, as you can see from the picture. Okay. GTP bind है और एक GTP है यहाँ पे. We can see here one more GTP is there, which is helping for the scanning. Scanning के लिए GTP hydrolysis होता है. And then see यहाँ पे looping हुई है, and the we can see start codon को recognize किया है. स्टार्ट कोडॉन के साइट पर जब इनिशिएटर टीआरएनए आएगा तभी वहां पे होगी जीटीपी हाइड्रोलिसिस ऑफ EIF2, राइट? EIF2 हाइड्रोलिसिस होगी एंड द फैक्टर विल बी रिलीज्ड. वी कैन सी हियर EIF2 along with GDP now, because GDP हाइड्रोलिसिस हुआ है तो GDP PI के साथ EIF2 will be released now. इसके साथ सब फैक्टर्स, बाकी के जो भी फैक्टर्स थे वो भी रिलीज हो जाएंगे, जैसे कि EIF1, EIF5, EIF4B, राइट? सब फैक्टर्स रिलीज हो गए एंड द नेक्स्ट फैक्टर विच इज एंटरिंग, दैट इज EIF5, EIF5 along with GTP. Carefully note that EIF5 is released out, okay, and EIF5B is entering along with GTP. And इसके बाद, okay, after this factor is entering, then the large subunit of ribosome joins. Okay, 68 subunit उसके बाद joint होगा. And then EIF5 का भी होगा GTP hydrolysis. EIF5B का भी GTP hydrolysis हो गया, and along with EIF1A, the factors are released. Both these factors are released. So this complex is now known as ATS initiation complex. तो यहाँ पे initiation हमारा complete होता है. Okay, we will again summarize, right? First of all, AUG को recognize करने के बाद EIF2 GTP का हाइड्रोलिसिस होता है, राइट? GTP GDP प्लस PI, एंड देन ये रिलीज होगा आफ्टर GTP हाइड्रोलिसिस. इसके बाद 1 EIF, 1 EIF5 and EIF4B, all these are released. Okay, EIF2 के साथ ये फैक्टर्स रिलीज हो जाएंगे एंड देन एंटर्स EIF5B. We have to remember this. EIF5 remove होता है. Okay, see once again we have to remember that EIF5 release होगा and 5B enter होगा, and 5B is important for large subunit association. EIF5B आने के बाद large subunit आएगा. EIFB also requires GTP. GTP चाहिए because ribosome को लाना है. Okay, we can see this is the factor bringing the ribosome. We can correlate. Okay, हम याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि EIF5B जो है that is very important, जो राइबोसोम को एसोसिएट करेगा, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइट? तो लार्ज सब यूनिट एसोसिएट करना है तो एनर्जी चाहिए, बिकॉज वो तो बहुत लार्ज सब यूनिट है. एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय GTP. So that's how we can remember. So this is about initiation, right? I hope initiation is now easy.
Now we will see the detailed things about initiation. Okay, initiation में first 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उसके बाद 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड उसके बाद 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 80S तो लास्ट सब यूनिट है, राइट? लास्ट सब यूनिट आने के बाद 80S हो जाएगा। So this is complete. Okay, now let's see once again. 43S इनिशिएशन प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है? EIF2 है, EIF3 है, tRNA initiator tRNA, EIF1, EIF1A. We saw this again, right? कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स में क्या है? EIF4 ABEG. मैंने बोला कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स को हाउ वी कैन रिमेंबर? एज, AGE, एक्स्ट्रा फैक्टर है, B भी है फैक्टर में, ओके, B इज आल्सो देयर। ऑर्डर इज फर्स्ट EGA then B, right? And the 43S complex binds to 5' end of mRNA. We saw this again. इसके बाद फॉर्मेशन होता है 48S कॉम्प्लेक्स का। 48S कॉम्प्लेक्स में सेम है, EIF2, EIF3, EIF1, 1A, okay, then EIF4A, B and F are there. Now one by one, EIF2 जो tRNA को लाएगा, right, consist of alpha, beta, gamma subunits. 3 subunits are there. Okay. अभी GTP से GTP कौन एक्सचेंज करता है? EF2B, right? रिएक्शन है and there is formation of ternary complex. I told initiator tRNA plus EF2 with GTP known as ternary complex. Okay, I will again mention here. Ternary complex में initiator IF2 आता है with GTP and initiator tRNA, which is for methionine, right? EIF2B generates the active form of why? Because it is what we can say exchange factor है ना, GTP exchange factor है, जब GTP बाइंड होगा तभी EIF2 एक्टिव होगा, so this is making the EIF2 active. EIF3 जो है बहुत बड़ा है, right? We saw from the picture maintains free 40S subunit, स्मॉल सबयूनिट को बाइंड करके प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ लार्ज सबयूनिट को प्रिवेंट करता है, राइट? प्रीमेच्योर बाइंडिंग, प्रिवेंशन ऑफ लार्ज सबयूनिट। EIF2 binds methionine tRNA to 40S subunit, 40S पर लाएगा EIF2. EIF2 is a GTPase, जिट पर हाइड्रोलिसिस करता है, GTP चाहिए, राइट? एंड EIF2B is the exchange factor. अभी हमने देखा जब GDP होता है तब GTP एक्सचेंज होना चाहिए, तो एक्सचेंज कौन करेगा? EIF2B करेगा. We have to remember EIF2 and EIF2B are helping each other. Basically EIF2B is helping EIF2 to make it active. जब GTP हाइड्रोलिसिस होने के बाद GDP को GTP से एक्सचेंज करना है तो तब ये हेल्प करेगा. Then the next thing is we have to remember EIF4F. 4 में complex है AGE, right? That is only the thing. 4F is a heterotrimer consisting of, heterotrimer means 3 different subunits. 4G is a scaffold protein. 4G, 4E bind the 5-methyl cap, right? हमने देखा पहले E bind होता है cap को, उसके बाद G, उसके बाद A. A is a helicase. We have to remember this. Their functions are also very important. 4A is a helicase that unwinds the 5' structure. Unwinding होगी. 4G binds 2 further factors. 4B stimulates EF4A helicase. 3APP binds 3'. हमें पता है ये सब. पॉली ए पर बाइंड होता है PAPP, ओके, एंड कैप पर बाइंड होता है EGA एंड देन B, और जो B है वो A की हेलिकेज एक्टिविटी स्टिमुलेट करे. We have to remember this. B stimulates EF4A helicase, that we don't know till now. Possible interactions यहाँ पे
where we know this EF4G binds to EIF3, EF3 से bind होगा, mRNA binds EIF4G, EIF3 and 40A subunit. Okay, we have to just recall the things. EIF1A, EIF1 and 1A enable scanning में help करते हैं. EIF5B induces GTP hydrolysis by EF2, मतलब EIF5B EIF2 का जो GTP hydrolysis है उसे induce करेगा. Induce means promote, we can say. EIF2 and EIF3 are released. EIF5B mediates joining of 60A subunit. हमने देखा जब EIF5B GTP के साथ एसोसिएट होगा उसके बाद ही लार्ज सब यूनिट वहां पे एसोसिएट होता है. So that is what we can say EIFIB is important for large subunit association, right? So this is all about initiation. I will just tell you जो मैंने स्टार्टिंग में बताया प्रोसेस जो है स्टेप्स पहले क्या होता है. ओके, फॉर्मेशन ऑफ 43S कॉम्प्लेक्स, उसके बाद 48 कॉम्प्लेक्स, हाउ द स्मॉल सब यूनिट गेट्स रेडी, देन mRNA कैसा रेडी होता है, उसके बाद स्कैनिंग कैसी होगी. फर्स्ट गो थ्रू दैट ओनली, मतलब प्रोसेस जो होते हैं स्टेप्स उससे पहले समझो एंड देन रिलेट इट विद द प्रोटीन फंक्शन. ओके, बिकॉज जब हम वहां पे देखेंगे EIF2 GTP को लाता है, दैट वी सॉ. उसके पहले कौन कौन बाइंड होता है, EIF1, EIF1A, EIF3, EIF5, like this we can relate. ओके, देन कैपर बाइंड कौन होता है, पहले E बाइंड होता है, उसके बाद G बाइंड होता है, उसके बाद A बाइंड होता है, इसके बाद B बाइंड होता है. लाइक दिस व्हेन यू स्टडी द प्रोसेस, और वी कैन से स्टेप्स पहले देखो एंड देन गो टू द प्रोटीन फंक्शंस. You can easily study the initiation. So initiation is complete now. Baki elongation and termination is very easy. Let's see elongation. Elongation phase. Elongation phase में पहले तो हम prokaryotic elongation factors है, that we will write EFTU, EF, ES and EFG. EFTU का काम क्या था, अमाइनो ऑक्सिलेटेड टीआरएनए को लाना. ऑन ए साइड, राइट, ए साइड पर. ओके, इसका यूकैरियोटिक काउंटर पार्ट क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द फंक्शंस. वेट, EFTS जो है अगेन एक्सचेंज फैक्टर है, ATP एक्सचेंज फैक्टर. ओके, इसको हेल्प करता है ना. EFTU का जब GTP हाइड्रोलिसिस होता है, राइट, इसे GTP चाहिए. एज आई सेड टीआरएनए को लाना है, GTP चाहिए, एनर्जी चाहिए. एंड जब टीआरएनए की बाइंडिंग होगी, आफ्टरवर्ड GTP हाइड्रोलिसिस होगा, then the GDP has to be exchanged with GTP. तभी EFTS will help. EFG helps in translocation. Translocation मतलब one codon move करेगा in the 3' direction. So that also requires GTP, right? इसे भी GTP चाहिए. Now I will write the just eukaryotic counterparts. Okay, eukaryotic counterpart इसका eukaryotic elongation factor 1 alpha. ओके, यहाँ पे जो फैक्टर है elongation factor 1 बीटा गैमा, एंड यहाँ पे elongation factor 2. बस दिस आर द elongation factors we have to remember. इसका फंक्शन यही है, अमाइनो ऑक्सिडेट टीआरएनए को इस साइड पर लाना, EF1 अल्फा along with GTP चाहिए इसको भी, राइट. एंड जब GTP हाइड्रोलिसिस होगा तो GTP एक्सचेंज जो करेगा वो है EIF1 बीटा गैमा. एंड जो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा
that is EF2. Okay, again अगर डिटेल में पढ़ना है elongation, go with the previous video because वहाँ पे हमने डिस्कस डिटेल में किया है. Okay, these are the counterpart working in the same manner. Right, now the last thing is the termination. टर्मिनेशन में क्या है? टर्मिनेशन में देयर आर टू टाइप, टू क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स एंड क्लास 1 and 2 release factors. Okay, RF means release factors. Let's compare again with prokaryotes. प्रोकैरियोट्स में 3 फैक्टर्स थे, RF1, RF2, RF3. Right? RF1 was for UAG specifically, RF2 UGA, and both will recognize UAA. RF1, RF2 क्लास 1 में आते हैं एंड RF3 जो है क्लास 2 में आते हैं. रिलीजेस RF1 एंड RF2 को रिलीज करेगा ये. यूकैरियोट्स में क्लास 1 जो रिलीज फैक्टर है दैट इज ERF1. ओनली सिंगल क्लास 1 रिलीज फैक्टर है that will recognize all 3 stop codons UAA, UAG, UGA. Okay, so this single release factor will recognize this stop codon, and the next factor, this is from class 1 and this is from class 2, ERF3. ERF3 releases ERF1. Got it? Simple. ऐसा टर्मिनेशन होता है. Okay, there are extra additional factor RRF, राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर. ओके, देखो अभी क्या हो रहा है, प्रोटीन चेन तो रिलीज होगी, राइट, प्रोटीन चेन रिलीज होगी, बट द mRNA एंड राइबोसोम आर स्टिल एसोसिएटेड विद ईच अदर. ओके, राइबोसोम्स mRNA अटैच होंगे, उसको सेपरेट कौन करेगा? तो RRF will separate the ribosome. This is one important thing we have to remember. All these factors shown here, how they work, what is the mechanism? So they mimic the tRNA. tRNA mimic. tRNA को mimic करता है और A साइट पर बाइंड करता है, राइट. फर्स्ट इज EFTU, elongation फैक्टर, जो A साइट पर tRNA को लाएगा, राइट, A साइट पर. So all this, we can also say that all these factors are working on the A side or the A side binding. Okay, A side binding. See, EFG, this is a tRNA mimic. RF3 is also a tRNA mimic, as well as RRF. All these factors bind to A side. Binds to A side. Okay, now there is one last chart, very important. See, you can summarize this, make a screenshot. You can save this, very important things. IF1 binds to A side, eukaryotic 1A. Easy. IF2 जो है P साइट पर इनिशिएटेड tRNA को लाता है, राइट. वी सॉ दिस entry of initiated tRNA on the P site. EIF2 eukaryotic counterpart, EIF3 and EIF5B. Okay. Then the next is IF3
small subunit binding to mRNA. Alright, EF1 है, EF4 complex cap binding protein and EIF3. Notes: EIF1A assists EIF2 in promoting initiator tRNA. Methionine binding to 40S also promotes subunit dissociation. EF2 is a GTPase. अभी हमने जो देखा वही लिखा है सेम, जो डिटेल में प्रोटीन फंक्शंस है. ओके, जीटीपी को बाइंड करते हैं, जीटीपी हाइड्रोलिसिस करता है, मीन दिस इज अ जीटीपेज. यू हैव टू रिमेंबर. EIF3 stimulates formation of ternary complex, right? It's binding to 40S and binding and scanning of mRNA. IB is involved in initiator tRNA entry and is a GTPase. IB also large subunit association के लिए important है, right? As well as 4 complex function in cap binding. Okay, AGEH along with B. Then in prokaryotes, elongation factor EFTU G है, TSG. Right? Again, I have shown the same EF1 alpha GTP binding, EF beta and gamma GDP exchanging. Same function they perform like a prokaryotic counterpart. EFG is like EF2, ribosome translocation. Translocation means what? Movement one codon ahead. 5 prime to 3 prime move करेगा ribosome, so उसे translation कहेंगे. And in that role is EFG in prokaryotes, EF2 in eukaryotes. Same here about release factors, RF1, ERF1. RF2 is also ERF1 only, and RF3 is ERF3. Right? Recognition of, you can see here all the codons, right? Stimulation of other RFs. यहाँ पे कुछ notes लिखे, very important. IF2 and IF5 have sequence homology. IF2, EF2, EFG, RF3 have sequence homology. Right? हमने देखा जो A साइड पर बाइंड होते हैं, right? And tRNA को मिमिक करते हैं. Okay, tRNA को मिमिक करते हैं. All these are having same sequence known as sequence homology. Then EF2 and EF1 alpha have sequence homology. The last thing, EFG and EEF2 have sequence homology. जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो ही आप अच्छे से देखिए. If not one time, watch the video second time, okay, and understand it properly with focus. I hope translation, especially eukaryotes, का बहुत easy होगा. Okay, so if you find this video helpful, do let us know in the comment section and subscribe to the channel. Stay tuned for the upcoming videos. Thank you.